गाइस अभी मनमीत की स्काई डाइविंग जंप फिनिश हुई है एंड वी आर इन द टाउन कॉल्ड पीटर्सबरो। हमने सोचा कि अब 2 बज गया है, तो फटाफट पेट पूजा कर ली जाए, कुछ स्नैक खा लिया जाए क्विक, और उसके बाद देन विल बी बैक टू अपोलो बे। और बीच में हमें रुकते हुए सारे स्पॉट्स कवर करने हैं। दे आर क्वाइट अ बिट ऑफ स्पॉट्स हियर, सो वो सब कवर करते हुए विल गो बैक। मिलते हैं दोस्तों थोड़ी देर में। ये देखिए लवली ब्यूटीफुल व्यू फ्रॉम द टाउन कॉल्ड पीटर्सबरो। This telling her experience about the jump. Hello. Guys, that's the skydive area where Manmeet did a skydive jump from. That's where it is. पहुंच गए अपने पहले स्पॉट पे। स्काईडाइविंग खत्म हुई, पेट पूजा करी, निकल गए हैं पहले स्पॉट पे पहुंचे। इट्स कॉल्ड द ग्रोटो। सीनिक लुकआउट है गाइस, मैं दिखाता हूँ आपको। अब थोड़ा मौसम पाड़ू हो गया है। Okay, short stroll of about 700-meter return, suitable for people with limited money. Okay, a little bit of about grotto. Okay, let's move ahead. देखिए गाइस कितना ब्यूटीफुल है यहाँ से। सब ये नीचे उतर रहे हैं सीढ़ियों से। सेफ्टी के लिए राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे पूरा फेंस दिया है, राइट एंड लेफ्ट पे पूरा फेंस दिया है ताकि कोई इसके पार ना जा पाए कूद के, बिकॉज दीज रॉक्स आर रियली वेरी अनस्टेबल। कभी भी टूट के सीधे समुद्र के अंदर डुबकी मार सकते हैं। ओके, ये यहाँ पे खत्म होता है grotto. ओह, दिस इज द ग्रोटो। यप, You have to take a picture with the grotto. oh, look at the view. Whoa, Wow. that is amazing. Wow. Summer, come. Actually went down. देखिए गाइस, ये सामने आपको दिख रहा है एक हल्का सा ग्रीन सा एक पैच दिख रहा है, दैट्स कॉल्ड द रॉक पूल। और सामने वो ग्रोटो है ना अमेजिंग व्यू। हम अपने सेकंड स्पॉट पे, इट्स कॉल्ड द लंदन ब्रिज। जाके जरा एक्सप्लोर करते हैं व्हाट्स देयर इन लंदन ब्रिज। अगेन इट्स अ नेक्स्ट सीनिक स्पॉट दैट वी हैव। Hey guys, spot number 3 पे आ गए हैं हम। It's called the Thunder Cave, Sherbrooke River and Broken Head. All these walks are pretty much Thunder Cave है 530 meters
from where we are from the parking. Sherbrooke River is 1000 meters and Broken Head 960 meters. So let's go and explore what's there. And the place is called Lockhart Gorge. Okay. Called the Lockhart Gorge. चले गाइस एक्सप्लोर करते हैं, मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। गाइस अगर आप यहाँ पे विज़िट करते हैं तो एक चीज़ ध्यान में रखना कि यहाँ पे काफ़ी व्हाट यू कॉल रेप्टाइल्स हैं। मतलब अभी हम जब शेरब्रुक रिवर की तरफ जा रहे थे, हमने ऑलरेडी वी हैव सीन 2 snakes क्रॉसिंग द रोड। सो हैव टू बी वेरी वॉचफुल व्हेन यू वॉकिंग बिकॉज लेफ्ट साइड राइट साइड में देयर आर जस्ट फुल ऑफ बुशेस। तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखिए, दिस इज द एंटायर एरिया इज फुल ऑफ ह्यूज बिग बुशेस एंड ट्रीज एंड एवरीथिंग। सो बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है। वॉच योर स्टेप्स एंड बी विजिलेंट। स्नैक्स गाइस ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं हम शेरब्रुक रिवर पे। देखिए फाइनल डिसेंट है टुवर्ड्स दैट पॉइंट। बहुत ध्यान से रोड पे नज़र जमा के चलना पड़ रहा है बिकॉज स्नैक्स का काफ़ी डर है यहाँ पे। ये आपको राइट हैंड साइड में ये दिख रहा है, अगर आपको दिखेगा, ये यहाँ से पानी निकल के आगे तक जाता रहता है और ये हल्का सा इसको शेरब्रुक रिवर बोलते हैं। देखिए वो आगे तक जा रही है वहाँ पे। बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल सीनिक स्पॉट है गाइस। गाइस अब यहाँ से अपवर्ड वॉक कर रहे हैं, ऊपर पहाड़ पे जा रहे हैं। मनमीत इज ऑलरेडी देयर। गाइस जहाँ पर अभी हम खड़े हैं ना, ये पूरा पानी से कवर्ड रहता है। अगर आप देखेंगे इसमें पानी है ऑलरेडी। सो मतलब वेव्स इतनी ऊंची आती हैं कि पूरा पानी से कवर्ड हो जाता है। तो देखिए मनमीत बिल्कुल कॉर्नर पे खड़ी है उधर। देखिए गाइस बस अभी यहाँ से निकलेंगे। मेरे ख्याल से बीच में 2-4 स्पॉट हैं विच वी आर प्लान टू कवर। अगर टाइम लगा तो उनको कवर करेंगे। अदरवाइज वी गोना हेड बैक टू अपोलो बे और फिर शाम को डिनर बुक किया है रेस्टोरेंट में। Good morning guys, day 4 in Apollo Bay. The packing is in full swing to go home. मैं सोचा बच्चों को निकलने से पहले फटाफट half an hour 40 minutes बीच पे लेके चलता हूँ and then we'll come pack everything, have a lunch and we'll be on our way back to Melbourne. Don't say hello, someone's already go to the beach. See you guys. हाँ गाइस, जिस प्रॉपर्टी में हम रह रहे थे वो इतनी ब्यूटीफुली लोकेटेड है कि वहाँ से बीच
is just like 5 minutes walking distance. अभी मेरे संग दोनों बच्चे हैं, हम लोग घर से निकले 5 मिनट में हम we are next to the beach now. And we spotted a koala.